इब्राहिम, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पास पेपर भेज दूंगा बेटा, टॉपिकल। ओके सर। आज मैं पास पेपर कराऊंगा इंशाल्लाह, रात को सर 10:30 आपने पे मुझे एक्स्ट्रा भेजा क्या? क्लास है। बोले, दोबारा बोले। आपने मुझे भेजा? हाँ, आपको भेजे ना, उस वाले ग्रुप में भेजे मैंने, ऑनलाइन वाले ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप में ना? हाँ, आपकी ईसा की मदर को भेज दिए, आपकी उसके ऑनलाइन ग्रुप में भेज दिए। आप अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, मम्मा के मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। इब्राहिम मुझे टेक्स्ट करेंगे, इब्राहिम को मैं भेज दूंगा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बॉन्डिंग पे थे। अगर हमारा बॉन्डिंग खत्म हो गया तो हम इसके भी पास पेपर स्टार्ट करेंगे आज। केमिकल बॉन्डेड। पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ आइस हो गया था, अमोनिया का हो गया था। ठीक है। हाँ भाई, कोई आप में से है जो बॉन्डिंग को समराइज कर सकता है, पूरे बॉन्डिंग के चैप्टर को? कैन एनीवन एक्सप्लेन द समराइज द होल चैप्टर ऑफ बॉन्डिंग? जी, ईसा, कैन यू briefly summarize? Okay, sir. So basically, we started the bonding chapter. We discussed electronegativity. It is the power of an हम्म। identified bond pair of electrons. Then we हम्म। started with ionic bonding, which is due to the complete transfer of electrons. हम्म। And then we discussed about electron donors and stuff, electron acceptors, metals and हम्म। non-metals that are involved in the ionic bonding. हम्म। Then we discussed about the dot and cross diagram, which represents the ionic bonding. Then after that, we discussed the covalent bonding. हम्म। Then we discussed about electron affinity. ओके। It's like the reverse of ionization energy, I think. Then after सही that, है, वेरी गुड। okay, then we discussed about the lattice energy. हम्म। Then we did the coordination number and stuff. कोऑर्डिनेशन, एग्जैक्टली, इन आयनिक बॉन्डिंग we discussed. ओके। Then we discussed comparing compounds, boiling and melting point. हम्म। Then we also discussed the conductivity. वेरी गुड। Then we discussed polar and non-polar compounds. We discussed how to पोलर एंड draw. नॉन पोलर कंपाउंड्स, वेरी गुड। Then we discussed about Fawn Club. These elements are like very electronegative and they're polar. वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। Then we discussed about dipole moment. It also identifies if there's a polar or non-polar compound. Then we वेरी discussed गुड। like structure and geometry and stuff of compounds. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। Then after that we did intermolecular and intramolecular courses. ओके। And then we discussed about the intermolecular, which is with other compounds. Include हम्म। van der Waal, HH bonding, and हम्म। all that. And I think that's it for bonding. ओके। नाउ few question from past paper, right? Isa, can you tell me pH3 is polar or non-polar? Sir, it's polar. Yes, it is polar. You are right. There is no electronegative element. Phosphorus is not an electronegative element, but it is polar. Why? Because of the distribution of a lone pair in pH3 is in such a way that it create polarity. So always remember pH3 is polar. Now question, consider this graph.
Here we have boiling point. Here we have HF. Then we have HCl. Then we have HBr. Then HI. So boiling point of HF is very high. Then HCl. Then HBr. Then HI. Now, Zaina, can you tell me why boiling point of HF is very high? HF Because का it's boiling harder point इतना. to Sorry? it's harder to break the intermolecular force. Can you identify the bonding present in HF? Intermolecular. In HF, it has phone. It has lone pair. Hydrogen is directly attached on phone. Three condition for a special kind of bonding. Yes, Isa. HF contain which type of bonding? So hydrogen bonding. Hydrogen bonding. And you all know that hydrogen bonding is the strongest intermolecular force of attraction. Question is explain the graph. Point number 1. HF has highest boiling point. Highest boiling point. Why highest boiling point? Yes, Isa, why highest boiling point? So because of hydrogen bonding. Because of hydrogen bonding. Sir, Because of, yes? can't we say that fluorine is like highly electronegative? So that's why it has strong bonds. Yes, you can say that. But electronegativity is not the single answer. Hydrogen bonding is a complete answer because in hydrogen bonding, you have electronegativity, you have everything. So best answer is because HF has hydrogen bonding, that's why it has highest boiling point. Point number 2. Another question. Why is boiling point increases from HCl to HI? बताइए why boiling point increases? There maybe because Yes, it has van der Waal, which is like very weak. yes, exactly. Very good. Very good. But do not discuss PDDF. Now write the DI. Do not discuss PDDF. Permanent dipole. Do not discuss PDDF. Do not discuss permanent dipole force in HCl. HBr. Now answer is from HCl to HI, molecular mass increases. Molecular mass increases.
Number of electron increases. Number of electron increases. Sir, Yes. so how do we know like which compound has which force of attraction? Now, number one, look at the structure, right? If it has phone, fluorine, oxygen, hydrogen, and hydrogen is directly attached with the phone, it means you have hydrogen bonding, right? If you have phone club means fluorine, oxygen, hydrogen, chlorine, bromine, and hydrogen is not attached, it means you have permanent dipole-dipole. If the compound is non-polar, it means you have van der Waals. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, from HCl to Hi, molecular mass increases. Number of electron increases. Van der Waals increases. Van der Waals increases. Van der Waals increases. Boiling point increases. Now next question. Huh? Yes, yes. सर HCl पोलर है तो उसके पास van der Waals कैसे है? मैंने ऊपर लिखा है, देखें जरा गौर से, पहले से लिखा दिया था आपको कि do not discuss permanent dipole-dipole force in HCl and HBr. आपको Yes. मेरी बात समझ आ रही है? Do not discuss. अगर आपने इसको लिखा तो फिर तो बात गलत हो जाएगी ना। HCl में तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी होती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Sir, जी जी बोले। every compound that has countable atoms has van der Waals, right? Yes, mostly all compounds atoms have van der Waals, right? But whenever you have the polarity, it has permanent dipole-dipole. So permanent dipole-dipole is more powerful than van der Waals. So we neglect the van der Waals, we consider permanent dipole-dipole. If the compound has hydrogen bonding, then we neglect permanent dipole-dipole and consider hydrogen bonding, because hydrogen bonding is stronger than van der Waals and permanent dipole-dipole. Okay, sir. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ग्राफ है, another graph. This graph is between H2O, H2S, H2, selenium. This is boiling point. So boiling point of H2 is very high, then H2S low, and then increases. बताइए क्यों इसका ग्राफ H2A का ज्यादा है H2O का? Sir, because oxygen is electronegative. Yes, oxygen is electronegative. आगे They have strong intermolecular hydrogen bonding. name the intermolecular force of attraction. Hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Now your answer is correct. So point number one in this graph is H2O has high boiling point. High boiling point. Why? Because it has hydrogen bonding. Because it has hydrogen bonding.
पॉइंट नंबर 2, बताइए फ्रॉम H2S to H2SE, why boiling point increases? Yes, So बताएं because why increases? Yes, electrons increased. yes, because number of electron increases, So hydrogen bonding increases. hydrogen bonding increases. Same answer. Same answer. From H2S to H2SE, boiling point increases. Number of electron increases. Van der Waals increases. Boiling point increases. Now next question. Discuss geometry. Discuss geometry. This is nitrogen. All are carbon. Here we have sulfur. It has 2 lone pair. It has सल्फर कौन से ग्रुप में बताइए? ग्रुप 6 में है ना? बताएं Yes. सल्फर कौन से ग्रुप में? 6 में है। Yeah. तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। गिने जरा। 1 2 3 4 5 6, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन हो गए। बताइए नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में? Group 5. 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 और एक ये आ रहा 5। तो बताइए कि कौन सा हाइब्रिडाइज है? ये एस कौन सा हाइब्रिडाइज है? Sir, SP. एसपी देखिए चेक करें। SP1 P2 P3, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए ये वाला बताइए, ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? Sir, SP2. sp2 चेक कर लेते हैं। SP1 P2 sp2 sp2, ये इलेक्ट्रॉन इसका गया हुआ है कहीं। ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है। आपने कहा ये sp2 है, बिल्कुल सही कहा। बताइए sp2 पे एंगल कितना होता है? बोले sp2 पे एंगल क्या होता है? Sir, 60. नहीं, sp2 is always 120 degree and shape is planar. बताएं sp3 है तो कौन सा एंगल होगा? 109.5. लेकिन इस पे 2 लोन पेयर है, तो 109.5 माइनस 2 5 -5, तो कितना आ गया? 104.5.
104.5, तो ये एंगल हो जाएगा 104.5। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पास पेपर करते हैं। Why glycerin is more viscous? Why glycerin is more viscous than water? पता है why glycerin is more viscous? The structure of glycerin is CH2OH. 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 This is glycerin. बताइए पानी से ज्यादा विस्कस क्यों है? So it has more bonds. More force of attraction. दोबारा बताएं। More force of attraction. More force of, why more force of attraction? सही बोला आपने, why force of attraction? बताएं कौन सा इसमें बॉन्डिंग हो रही है? Hydrogen. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, ये आंसर सही होगा। इट हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पानी में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? एक होती है इसमें से। तो इसलिए इसका आंसर होगा बिकॉज इट कैन फॉर्म एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज it can form extensive hydrogen bonding। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और मुझे याद आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट क्वेश्चन, what is the importance of what is the importance of hydrogen bonding? आपने कभी डीएनए का नाम सुना है? Yes, sir. तो डीएनए को जो बाइंड किया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है। दिस इज डीएनए, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डीएनए स्ट्रैंड bind because of hydrogen bonding. Number 2, water has more surface tension because of hydrogen bonding. Some liquids are more viscous. Some liquids are more viscous. Why? Because of hydrogen bonding. Because of hydrogen bonding. चलिए ये चैप्टर खत्म होता है। अब आप उसको खोलें, क्या कहते हैं, पास पेपर आपके पास आए ना? आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी सर। अभी हम पास पेपर करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग के पास पेपर मैंने इधर डाले हुए हैं। इक्लोबीरियम भी है। पास पेपर कहाँ है? ये रहा पेपर 2, टॉपिकल पास पेपर। टॉपिकल पास पेपर में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर कराया था। ये रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल भी है। मुझे बॉन्डिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो टॉपिकल में लेके जाता हूँ। बताइए एटॉमिक स्ट्रक्चर कराऊं या बॉन्डिंग कराऊं? कराओ, मुझे पास में भेज सकते हैं? मैंने भेजे तो हैं भी आपको। आप कौन, इब्राहिम? जी जी, नहीं सर, मुझे नहीं आया। इब्राहिम, मैंने आपसे कहा था ना, आप मुझे एक मैसेज करें जरा मेरे नंबर पे, मैं आपको फौरन उसी नंबर पे भेज दूंगा। मैंने ब्लैंक मैसेज कर दिया। ठीक है इब्राहिम, मैं आपको ये अभी भेज देता हूँ, ये ले। आज रात में भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 10:30 पे क्लास स्टार्ट करूँ आपकी पास पेपर की एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा जी। इब्राहिम मिल गया आपको? जी सर, मिल गया। तो हम जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। इसको हम कोला पे लेकर रात में स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिकल पास पेपर में आ गए। चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 81, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन नंबर 81। डिस्क्राइब द कोवेलेंट बॉन्ड्स present between the carbon atoms in ethene molecule by completing the table। ये देखो, ये इथीन है। बताइए वो इथीन की हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपसे कराई थी। आप बता सकते हैं कि इथीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। sp2। वेरी गुड। दिस कार्बन इज sp2। दिस कार्बन इज sp2 एंड हाइड्रोजन इज s। सो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, sp2 डबल बॉन्ड sp2 s s s s। और पाई बॉन्डिंग होती है pz pz की। बोले ऐसे ही है कि नहीं है? यस यस सर। सर। बोले ऐसे ही है, समझ आती है बात? बोले मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर। जी सर। अच्छा जी। अब आप बताइए टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? सर एस ऑर्बिटल, एस px, ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल।
पी एक्स ऑर्बिटल और SN-PX। ठीक है, आप बड़ी अच्छी कोशिश करें, शाबाश। और आप में से कोई नहीं बता सकता? बोले, सभी तो कुछ लिखा है मैंने। बोले, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में ये शक्ल नजर आ रही है, ठीक है, इथीन की। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि इसमें टाइप ऑफ ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व है और हाउ द ऑर्बिटल ओवरलैप। मुझे ऐसा लग रहा है ये हेड टू हेड पूछ रहा है। आप अपना आंसर दे सकते हैं, बोले। So in sigma it's head to head. हाँ बोले, शाबाश, सिग्मा सही में कह रहे हैं, बोले। और पाई में साइड टू साइड। साइड टू साइड, ये भी बिल्कुल सही बात की है आपने। और आप में से कोई नहीं बोलेगा कुछ? चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड, हाउ द ऑर्बिटल ओवरलैप। सिग्मा बॉन्डिंग होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और बताइए दूसरी कौन सी बॉन्डिंग होती है? राइट टू साइड। साइड टू साइड, वेरी गुड। साइड टू साइड ओवरलैपिंग। बताइए टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व सिग्मा बॉन्डिंग में कौन से हैं? सर PX ऑर्बिटल एंड S ऑर्बिटल। देखिए वो तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है ना। बॉन्ड में तो सिग्मा बॉन्ड में sp2 है और sp2s है, नहीं? यस सर। और पाई बॉन्डिंग में pz है। बोले, आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई सवाल आए, कई सवाल हैं, यकीन माने। अगर आप इसको ढूंढेंगे तो मैं आपको इसका ईयर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है। आइए इसका मार्किंग स्कीम में चेक करते हैं, सही आंसर लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है, sp2 और हेड टू हेड इसमें डायरेक्ट लिखा है। साइड वे भी लिख सकते हैं।
यहाँ साइड वे लिखा है, इधर पीजेड लिखा हुआ है। बिल्कुल सही लिखा है। sp2 sp2 भी लिखा हुआ है। sp2s गलत हो जाएगा क्योंकि बिटवीन कार्बन एटम्स लिखा हुआ है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Sir, why did you write PZ, PZ? Because pi bonding is between p and p. Yes, so why couldn't we write PY or PY? Because the bonding is formed between first pz and then py. Oh, okay, sir. First utilize the last one. चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए देखें, आप गौर से देखें, आपको मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है बताओ मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड में बॉन्डिंग कौन सी है। बोले बोले मैग्नीशियम में कौन सी बॉन्डिंग होती है? बोले मैग्नीशियम मेटल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? Metallic bonding. मेटालिक बॉन्डिंग, शाबाश। मेटालिक बॉन्डिंग। और सोडियम क्लोराइड में Ionic. आयनिक बॉन्डिंग, करेक्ट। बताएं एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम क्लोराइड। यस। Sodium chloride has higher melting point due to its strong electrostatic force of attraction. ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक नंबर का सवाल है। सोडियम क्लोराइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मैग्नीशियम because ionic bonding is stronger than metallic. Than metallic. Yes, question number 3. Explain the difference in the melting point of phosphorus and sulfur in terms of structure and bonding. Yes. Phosphorus is P5, P4. This is phosphorus. And sulfur is just like W. Sulfur, 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 sulfur. So which one has more electron? P4 or S8? Yes. S8. 16 multiplied by 8 is? Sulfur is 16 or 32? Sir, 16. Okay, 16 8s are 128. 128. Phosphorus is 15. 15 fours are 60. Which one has more electron? Sulfur. That's why melting point of sulfur is higher than sulfur.
sulfur exists as acid and phosphorus as P4. Phosphorus as P4. Acid has more electron, strong van der Waals than P4. चलिए बताइए what is electronegativity? That is the power of an atom to attract bond pair of electrons towards itself. Bond pair of electron. Very good. Power of an atom. Yes. How will we know the structure of P4 and S8? We have to memorize, right? But Oh. scientists found the structure by X-ray crystallography. But you have to memorize the structure. Okay, sir. Power or tendency. Power of a bonded atom to attract bond pair towards itself. Yes, next question. Why electronegativity increases across a period? Yes, So because across the period, electron increases and the nuclear charge increases, but the size remains same. across the period, proton number increases, nuclear attraction increases, shell remains same, shielding remains same. Across the period, proton number, nuclear charge, nuclear distance, shielding all increases. Across the period, proton number, nuclear charge, nuclear distance, shielding increases. All increases. Hence, Sir, how does shielding increase? if shell is same, shielding is same. तो क्या करना चाहिए? Shielding should be same. शाबाश. यार बाकी क्यों नहीं बोलते? Shell, shielding same. And nuclear distance? Nuclear distance also remains same. So we have to write nuclear attraction. Across the period, proton number increases, nuclear charge, nuclear attraction increases. Shielding same. Shielding remains same.
So nuclear charge across the pair, proton number, nuclear charge, nuclear attraction. Increases. Shielding remains same. Hence electronegativity increases. Yeah, ईसा अब सही है. जी सर. Name the strongest intermolecular force that exists between NH3 molecule. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Hydrogen bonding, ये भी सही है. Intermolecular is hydrogen bonding. Correct. Correct. Yes. Next. Draw a diagram to show the formation of the strongest intermolecular force between two molecules of ammonia. Sir, what type of force of attraction do you have in NH3? Yes, what type of force of attraction? Isa, यस सर. what type of force of attraction? What type of intermolecular attraction? It has phone. Hydrogen is directly attached. It has lone pair on phone. यस सर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट. Yes, which type of force of attraction? Hydrogen bonding, यार. सर मैंने कहा तो था ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वो तो ऊपर वाले में बोला था ना, इसमें इसमें पूछ रहे हैं. अच्छा, मतलब दोबारा वही क्वेश्चन, मतलब कोई और आंसर होगा. हाँ, ये ना 4 चार्जेस बताने हैं आपने. This is hydrogen bonding. अमोनिया और वाटर दोनों का मेल्टिंग पॉइंट चेंज है, बताएं क्यों? सर बिकॉज ऑक्सीजन स्टेट. बताइए, हाइड्रो पानी में कितने लोन पेयर होते हैं? 2 मार्क का क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है फोन क्लब. बताओ, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की. So first point is electronegativity of oxygen is greater than electronegativity of nitrogen. बताइए सेकंड पॉइंट, ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं? बताएं, वाटर के ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं? 3. 3 लोन पेयर हैं. नो सर, 1. उन्हें अरे 2 है ना यार, एक गेरा लोन पेयर. ये सब बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर. भाई 2 लोन पेयर है ना, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा. NH3 में कितने लोन पेयर हैं? 1. तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. बात समझ आ रही है? यस सर.
oxygen has two lone pairs, it can form two hydrogen bonds. While nitrogen has only one, कहाँ गया? While nitrogen has only one lone pair, only one hydrogen bond. बोले बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलिए अब स्टार्ट से करते हैं. अब 3 नंबर का सवाल है. सॉल्ट सोडियम क्लोराइड फॉर्म ट्रांसपेरेंट. एक 2003 का क्वेश्चन है. 2003. बताइए सोडियम क्लोराइड में कौन सी बॉन्डिंग होती है? Ionic. आयनिक. भैया आयनिक होती है, आयनिक. तो बताइए आयनिक में क्या करेंगे? बोले आयनिक में क्या करेंगे? लेटिस कैसे बनाएंगे? यार आप भूल ही जाते हैं, मैंने आपको बता देता. एक स्क्वायर यू बनाएंगे, फिर एक स्क्वायर यू बनाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिला लेंगे, फिर सोडियम लिखेंगे, इसके इधर क्लोराइड, इसके इधर क्लोराइड. बोले ये बनेगा सही स्ट्रक्चर? यार आप तो बिल्कुल ही लोग, आप लोग बोल ही नहीं रहे कुछ यार. समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे होना बोले. चाहिए ना. There हाँ should be. ईसा आज थके हुए लग रहे हैं आप. सर वहाँ पर सोडियम होना चाहिए ना, इंस्टेड ऑफ वहाँ द. सोडियम होना चाहिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ. ये आ गया सोडियम. बताइए यहाँ क्या होगा? क्लोराइड. क्लोराइड होना चाहिए. बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, क्लोराइड होना चाहिए. दोबारा बनाता हूँ आपके लिए आसानी के लिए. दिस इज सोडियम, दिस इज अट्रैक्टेड बाय क्लोरीन. नाउ सोडियम. अब बताइए जो आखिरी बचा उस पर क्या लगना चाहिए? क्लोरीन. क्लोरीन लगना चाहिए. शाबाश. इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें. सोडियम, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सर 6. 6. वेरी गुड.
Similarly, chloride. Sodium plus. ऐसा बनाएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे 3। चलिए बी पार्ट बताइए क्या लिखेंगे। एक्सप्लेन बाय crystal of sodium chloride do not conduct electricity but molten sodium chloride does. बोले The free flow of electrons. नहीं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें तो आयंस है ना। Sir, in molten ions are free to move, so they can conduct electricity, but in crystal state they will not be free हाँ, to move. देखो मोल्टन में क्या होगा, क्रिस्टल लेटिस ब्रेक हो जाएगी। बात समझ आ रही है। इन मोल्टन NaCl crystal lattice will break and ions are free to move. That's why that's why explained by crystal of sodium chloride but molten. That's why molten NaCl conduct electricity. आपको मेरी बात समझ आई? क्रिस्टल लेटिस विल ब्रेक। Yes, sir. चलिए ये 2003 हो गया। अब आप अगला क्वेश्चन है 2005। शो आउटर इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अब वो जमाना गया सर्किल वाला। बताएं कार्बन कौन से ग्रुप में? For group 4, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके। बोलो सल्फर कौन से ग्रुप में? group 6, 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। की सल्फर इलेक्ट्रॉन circle is carbon valence electron. This is called bond pair. These two are lone pair. Suggest the shape. Yes, suggest the shape and angle. for linear, Linear. Very, very good. An angle 180. 180 degree. Very good. Shape is linear. Bond angle is 180 degree. Next. This question is from 2008. तो बीच में से करते हैं ये आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर sir. 11। Yes. Sir, when will the class end? Because I have another maths class. At what time? 2:30 Pakistani time. Okay. So still we have few minutes. Okay, sir. Should we end the class?
right Sir, now. it's up to you. Yes, Sir, it's up to बोलो। you. हाँ, You खत्म कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि कल भी हम रात में क्लास, आज रात में क्लास होगी, ठीक है, 10:30 पे पास पेपर क्लास, राइट? पास पेपर फॉर चैप्टर नंबर 1 and chapter number 2, Sir, atomic 10:30 structure as well as Pakistani bonding. time. पाकिस्तानी टाइम 10:30। Okay, sir. ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। Yeah, officer. अल्लाह हाफिज बेटा।